Doing good. Good to see all of you. Let's see if I can put this here. तो क्या हाल है everyone? फाइनली मुझे अब मौका मिला है टू कम लाइव, और इससे पहले जो है वो आई वाज मोस्टली वर्किंग ऑन द वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ज़्यादातर उस पर काम चल रहा था, लेकिन आई डू नीड टू वर्क ऑन द एंगुलर कुकबुक। तो कुछ काम एंगुलर कुकबुक पे चलेगा, कुछ काम एंगुलर कुकबुक के अलावा डिफरेंट चीज़ों पे चल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच हु एवर हैज़ ऑलरेडी इनरोल्ड इन। हो सकता है हम थोड़ा बहुत कोड विद एहसन की जो साइट है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हूँ, बट आई थिंक मेन फोकस जो इस वीडियो या इस स्ट्रीम का रहेगा वो एंगुलर कुकबुक पे रहेगा। बट लेट मी नो इन द चैट हाउ आर यू डूइंग, आर यू गुड। लेट्स ऑल्सो क्विकली इन द मीन टाइम एक और काम ये कर लेते हैं कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अपनी स्लाइड्स वगैरह मेंटेन कर रहा हूँ। तो लेट्स क्विकली ऐड दैट। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 1 और 2 स्ट्रक्चर की स्लाइड्स ऐड की हैं, और हमने कुछ कुछ मैंने मैजिक और मॉडिफिकेशंस किए हैं स्लाइड्स के अंदर, बट आई कैन शो यू इन जस्ट अ बिट। तो ऐड टॉक्स structure of web page slides, edit slides dot html to avoid repeating code। एक छोटा सा काम मैंने अभी इस स्ट्रीम के अंदर ये काम किया था कि instead of having a lot of files, I now have only one file, that is the slide.html. So what this does is that it tries to look into the URL parameters, gets it out, and then just adds that to the HTML, and then you can see the slides working. So let me just put this code, push it. Am I on a different branch? Web Dev Basics. Yes, let's actually add that. Maybe I should be able to find and see that. That's that one. Where is the other one? That's that one. Let's add it here actually. So CodeWithAhsan.dev/slides. So right now I'm maintaining all my slides here. Why can't I see? Wait a second. There should be a doc for chat. Let's keep it like this and put it here. Cool. So we have the slides right here in the Web Dev Basics. Oh, because this has not been merged. Slides. Let's see. So we got Web Dev Basics, and I can push this tests. Interesting. You can't see anything. You can't see my screen. I can see my screen. Adil Dev. I can see my screen perfectly. Why can't you see my screen? Why can't you see my screen? Let's see. Output, video. I think it should be good. Let me see if I can see it. Yeah, Tata can see. Something wrong with the way you are using it. Let's see if I can see it on my channel. Oh, on Twitch it doesn't show it. Interesting. It doesn't show on Twitch. My recent video worked with me on Angular. How's it going, everyone? I hope you probably need to click that button. For some reason it seems like it's ended or what. How's it going, everyone? I hope you. Let's see if I can retoggle it. Good to see all of you.
close this right now. Let's see if I can resume this. Let's see if I can find it now. So this should be here. Put this here. It says offline for some reason. I think Twitch is not working, maybe because of some issue. Not really sure. Yeah, but I can see others. Now it says live. So now you should be able to see it, but it still says, nah. I would say go to YouTube. Now it's working. You should be able to see it now. Yeah, we're in the inception now. Okay, so I'm gonna quickly go and merge all of this. There's a lot of slides here. Let's merge this for now. Okay, there we go. Files changed. Yeah, we added a couple of slides, and I think once this is merged, we should be able to see it on CodeWithAhsan/slides or the link. We're gonna have a look at that in a bit. All right, let's see. Let's bring in the code. So let's open Angular Cookbook, second edition. All right, और यहाँ पे हम I think we're gonna do it in Urdu. Let's keep it in Urdu. The last time हम काम कर रहे थे multi-structure directives पे. We're gonna do the same. Multi-structure directive. Okay. और हमारे पास है chapter 2. Let's see if I can find it. Da-da-da. Chapter 2, chapter 2, chapter 2. There you are. Okay, now I can see Twitch also being happy. तो हम I think ये करेंगे कि I'll put out the book towards the side because obviously I'm not supposed to share the content of the books. But book के अलावा हम जो कोड कर रहे होंगे you're going to be able to see that. तो लास्ट जो हम काम कर रहे थे एंगुलर कुकबुक पे वो कुछ ये था. हमारे पास स्टार्ट का फोल्डर है. फाइनल के अंदर चैप्टर 2 के अंदर मल्टी डायरेक्टिव्स नहीं है, तो हमने स्टार्ट किया था मल्टी डायरेक्टिव्स पे. और हाँ, मुझे याद आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त वापस आ रही है. तो npm स्टार्ट और npm रन सर्व ng मल्टी स्ट्रक डायरेक्टिव्स. यही नाम है, स्ट्रक डायरेक्टिव्स. सही है. ओके, इसको रन करते हैं और हमारे पास अगर हम अपनी स्लाइड्स पे ज़रा देख लें तो वेब डेवलपमेंट बेसिक्स. नोप, ये अभी तक वही दिखा रहा है, तो इसका मतलब है अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है. लेट्स सी. ओके. स्टिल नॉट अपडेटेड. फील्स लाइक हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा GH पेजेस का. That's fine. Okay, let's go back to the browser and here we're gonna go to localhost 4200. सही है. तो ये वो एप्लीकेशन है जिसमें हम काम कर रहे थे, जिसमें हम देखेंगे कि ngIf को और ngSwitch को साथ में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने इसकी इसका इनिशियल UI जो है वो मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, जिसमें हम एसेंशली यहाँ से फ्रूट्स उठाते हैं और हम उसको बकेट पे ऐड करते हैं और फिर हम उसको बकेट से रिमूव कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर कि ये आई डोंट थिंक कि ये सेव होता है, परसिस्टेंट होता है. नहीं, ये नहीं होता. सही है. और इसके अंदर, इस रेसिपी के अंदर जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम किसी तरीके से
दो डायरेक्टिव्स, दो एंगुलर के डायरेक्टिव्स को, जो कि ngF है और ng switch है, इसको एक साथ इस्तेमाल कर सकें। सही है। तो अगर हम अपना कोड देखें फिल वक्त, तो ऐप कंपोनेंट HTML के अंदर मन मेक इट अ बिट जूम्ड आउट ताकि हम ज़्यादा कोड देख सकें। सही है। तो यहाँ पे वी हैव, हाँ यहाँ पे हमारे पास ngF लगा हुआ है और हम यहाँ पे else bucket empty मैसेज करते हैं। ठीक हो गया। सही है। अब हमें ये देखना है कि हम इस पे ng switch किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी हैव अ लुक एट द बुक। तो हमारी बुक क्या कहती है, रीड टाइम ब्ला ब्ला ब्ला। लेट्स सी। तो हम ये कह रहे हैं बुक के अंदर मल्टी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर डायलॉग ना ना ना, ये पिछला कोड है, ये नया कोड है। सही है। तो इसमें हमारा गोल क्या है कि हमें सर्टेन सिचुएशन में दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। और हम रेसिपी में करते क्या हैं, हम कह रहे हैं कि बकेट लेंथ ज़्यादा होगी, एल्स ये होगा, ये हम पहले से ही लगा चुके हैं। फिर हम कह रहे हैं फाइनल स्टेप इशू रैपिंग। अच्छा, और स्विच करके हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि एन जी इफ़ एल्स ये होना चाहिए, ओ सॉरी, हमें एन जी इफ़ और एन जी फॉर एक पे लगाना है। हमने यहाँ पे एन जी स्विच क्यों बोला हुआ, ये तो नाम ही गलत है। दिस शुड बी एन जी फॉर, एन जी फॉर टुगेदर। अच्छा, ठीक हो गया, मेक सेंस। और हम्म हम्म इसमें एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमें सेम एलिमेंट पे दोनों चीज़ें चाहिए, जो कि है ये, हम्म ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है, सही है। सही है। और अगर मैं सारे आइटम्स रिमूव कर देता हूँ, तो ये नो आइटम्स इन बकेट एट सम फ्रूट्स, ये हमें चाहिए। हम्म सही है। तो ये हमें एक्चुअली इंटर करना होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव इट। तो हम इस एन जी इफ़ को और एन जी कंटेनर को यहाँ से हटा देते हैं, और हम यूज़ करते हैं ये कि हमारे पास एन जी फॉर लगा हुआ है और आइटम ऑफ बकेट आ रहा है, और हम एन जी टेम्पलेट को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है इस वक्त वो हो जानी चाहिए ऐसी कि जिसमें ये मैसेज नज़र ना आ रहा हो। लेट्स सी। सही है। तो इन द बिगिनिंग अगर हमारे पास कोई बकेट में आइटम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। हम ऐड करेंगे तो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, लेकिन हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोई मैसेज नहीं आ रहा। सही है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हम इसको अपनी बुक में ऐड कर सकें। क्या हमें जूम करने की ज़रूरत है मज़ीद? आई थिंक ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कर लेते हैं कि खूबसूरत लगे और खौफ सूरत ना लगे। सही है जी, ये हो गई कॉपी, और इसको हम पेस्ट कर देंगे हमारी बुक की साइट पे। तो ये हो जाना चाहिए ऐसे। ओके। अच्छा, लास्ट जो हमारी इमेज नंबर थी वो थी 2.8। तो ये बुक नंबर और ये इमेज नंबर जो है 2.9। इसका थोड़ा सा एन जी एफ एंड एन जी फॉर हाउ हाउ टू यूज़ मल्टीपल
structural directives on the same element together. How to apply multiple structural directives on the same element together. Together की ज़रूरत नहीं है. How to apply multiple structure on the same element. सही है. You might want to use more than one structure on the same host or for the same element. For example, a combination of ngIf and ngFor together, which is not something Angular supports out of the box. In this review, you're going to learn how to do how to work with multiple structural directives to be applied to the same element. ओके सही है. ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी और अब हम जो है वो एक काम ये करेंगे कि हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनिशियल वो कॉपी करेंगे यहाँ से. स्टार्ट एप्स चैप्टर 2 ठीक हो गया और ये आ गया यहाँ पे और हम नीचे जाके इस पे भी ये पेस्ट कर लेते हैं ताकि वी हैव दिस राइट कोड. अच्छा, इस ऐप का जो अभी हमने चलाई है इस ऐप का नाम है ng multi struct directives. ये कॉपी करते हैं, डॉक्यूमेंट में ले चलते हैं ये और ये हो जाना चाहिए ऐसा. लेट्स सी. तो ये आ जाएगा रिप्लेस करके ng show for डायरेक्टिव पे और ये आ जाएगा ng show for directives. ठीक हो गया. ng multi struct directives और इसका भी नाम चेंज करेंगे ng multi struct directives app running on. ठीक हो गया. Now that we have the we'll start by moving the element with no element. Okay. I think सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो टेम्पलेट क्रिएट करना चाहिए कि आप इसका टेम्पलेट तो क्रिएट करें, उसके बाद की बात होगी. सॉरी. हाँ ओके. विल स्टार्ट बाय हाउ टू डू इट. ये रेसिपी कैसे होगी. सबसे पहले तो हम कहेंगे कि विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग और हम यहाँ पे ये कहेंगे in this recipe we will show a message conditionally using ngIf for the case where we have no items in the bucket. Since we are supposed to show conditionally and apply the for loop on the same element, this is a perfect example to use for the recipe. Okay, recipe ये हो गया. अब हमने कहा we'll start by creating a template for the message to be shown. और हम इसको क्रिएट करेंगे ऐसे कि हमने इसको रखा हुआ था within the fruits div. Okay. By creating the message to be shown when there are no items in the bucket. ठीक हो गया. अच्छा, इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से कोड में like this. और इसको जो है वो हम अब ऐसे कर लेते हैं. गुड हो गया. सही है. एक इसमें प्रॉब्लम ये है
कि हमें ये चाहिए अंडर ए div। तो हम क्या काम करें, हम इसको रैप करेंगे एक div के अंदर। सही है, सही है। हम कहेंगे कि अगर हम इसको वापस से यूं कर दें और यहाँ यूं कर दें, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं div class fruits एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं div, यहाँ पे भी आई थिंक हम कह सकते हैं div class fruits, एंटर। और यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो div class fruits हो गया, ng टेम्पलेट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम ज़रा कोटेशंस प्रॉपर्ली कॉपी कर लें, क्योंकि ये कोड कोटेशंस हैं। तो हमारे पास क्लास फ्रूट्स है, इसके अंदर बहुत सारा कोड पहले था, हमने इसमें ये ऐड कर दिया। सही है, बकेट we'll modify the app.component.html file for this as follows। ठीक हो गया, तो then we'll do this and then we can add the bold here। Cool, now that we have this, first we're going to create this right here, then we're going to add this like this। So what we are going to do is हम यहाँ पे कहेंगे now we are going to apply the, where is it, notice that we moved the entire div out of the page section. Did we? I don't think so. I don't think so. Okay, so let's remove all of this from here. I think we have done this already. All right, let's do this. So we're going to say, notice that we moved the entire div out of the page section. Now we'll use ngFels to, yeah. I would rephrase this actually. Now we'll try to apply the ng if condition to the element that renders the fruits. Let's modify the code in the same file as follows. So we have a main. No, do we have a main in here? But we need to do one thing actually. Let's save this. We're gonna have to first commit this and then we have to work on the rest of the stuff. So I would go ahead and do a commit. Clear git commit m. I would say multi struct directive add starter files. Cool, we got a commit here and now we can do this. So we added this in the, do we have it in fruits? Yeah, we do. Then I can do this, but not really this, and maybe, yeah, this. Yeah, if we do this, then it's going to be a problem. It's going to throw an error. So if we do it, let's do it like this as follows. I'm going to copy from here to here.
So div class fruits items, and here we say ng bucket list. I think the rest of the things should be exactly the same, so I'm gonna cut those out. And then also fruit item title, blah blah blah, delete icon, blah blah blah. And I can also I think I can remove most of it like this. Yeah, so we have everything in one line. So what we really did was the ng if condition, we put it here, added it here, and now we're saying, hey, just use the bucket empty message. Yes. So with this change, you're gonna have an error, of course. So we're gonna show the error like this. Copy this guy. The last image was 2.8. We're gonna go with a 2.9 for the error on the console. No, that's not or we could actually, yeah, we could actually show this message from here as well. But I think would it be nice to do this? No, can't have multiple template bindings, one element. But do we show the same error here? No, we don't. Hey, Meri Kitab, how's it going? What I don't really want to do is कि हम ये ना कर रहे हो. I want to show this error message, but I also want to hide my mouse highlight. Let's hide it. Let's get rid of this. Okay, now we're good. तो अब अगर मैं इस पे mouse over करूँ, we have this error that we can pick now. And this one says can't have multiple bindings on the same element. Use only one attribute prefix with this. Cool. So we got that message. We can replace this one here. Error. Angular language service explaining we can't use two structural directives on the same element. Okay, so there we go. We can fix it by moving one of the structural directive to an ng container wrapper, which doesn't create any additional HTML element in the DOM. Right? Let's modify the code as follows. So we modify the code, and we also define that ng container is going to be used. And what we essentially do is we're going to go ahead and say, hey, give me an ng container, and I'm going to put the ng if from here to here, and then I'm going to move all of this inside, and there we go. But I don't want to have this template inside there, so I'm going to put this right here. Cool. I think now it makes much more sense. So I'm going to copy this whole div and then paste it here. Pa-pa-pow, pa-pa-pa-pow, pa-pa-pow, and there we go. So let's see if this is too much. So what we did was we created an ng container. We had everything inside. I'm going to move everything inside here, just like this.
And then what we did was we have the template already here, and we don't need to say what the template contains, but I could do this, right? Cool. So I think this is really important. So ng container, if class, and then container. I think we're good. So we have all these things in order. Cool. So ng container, blah, blah, blah. I think we're good. So once we do this, we're going to get rid of the code. And now if I go to my final app, yay, we can see that we have a message that says no items in the bucket if there's no item in the bucket. And I can say apple, add to bucket, works, banana, grapes. So we add a bunch of things here. And now if I can remove, and as soon as I have nothing, boom, we get the no items in buckets. If we also inspect this, you're going to see that in fruits, we have this div and nothing here. So if I add an item to bucket, this should go away. Poof, gone. And now we have a loop of fruit items. So one item, two item, third item, fourth item, and we can keep removing them. Shoop, shoop, shoop. And finally, that's gone. And then we have the add fruits. Cool. So I think now I can actually take this screenshot. And then we can talk about the how it works. Did anyone of you thought that writing a book would be fun? Be honest. With the change above, no. Can I do this? With the change above, you should be able to see the message when there are no items in the bucket. Follows. Poof. There goes the image, and there goes the numbering. 2.9, 2.10. Final result with ngIf and ng4 together. Since we can't use two structured directives on the same element, we can always use another HTML element as a parent to use the other structured directive. However, that adds another element to the DOM, and it might cause problem for your element hierarchy or other layout behavioral issues based on your implementation. However, ng container is a magical element by Angular that is not added to the DOM, but can be used to wrap some logic. Oh, I can also DOM. Instead, it just wraps the logic and condition that you apply to it, which makes it ideal for us to use in cases like these. There we go. Group sibling elements with container documentation. Yay, yay, yay. Okay, I think this was good. We were able to do one recipe. So I want to test the final one. So styles, global, what did really change here? Not disabled, Did I miss something? No. Did I commit without anything? No.
That's sad. That's sad. So we have the final. Oh, no, final globals. That's still fine. App component HTML. Did we change anything in these? No, we did not. Okay, so I messed up. I did not commit the right files. So let's do this. I'm gonna do this. Control Z, Control Z, Control C. This, and then no. Let's see if I can get it correctly. So no ng. All right, let's do it this way. No ng container, no bucket messages, and save. Cool. This is how it's supposed to be. So git add, git commit, amend. There we go. Now we can do the fix, which is this one. There is something missing here. Yeah. So ng template, we're gonna move all of this inside here. Move this. Why does it create another one for here? That's weird. Oh, because okay. Maybe it's because of this. Angular language service is behaving weird. So we got this ng container which contains this div. Then we got ng template there. So if I save this, it creates another ng container here for some reason. Why? Why? I don't know why, but something is causing this to create another ngif. Let's see. Else bucket message. Maybe it doesn't understand that this is a message. Then we got fruits, blah, blah, blah. We have a div with item name, delete from bucket, delete. Yeah, everything looks good, to be honest. All right, let's save this without formatting. So format without, save without formatting. In this case, now we should have a solution. But we are going to copy the solution. So empty and run copy, chapter 2, ng, multi struct directives. This will create a copy of the project, but in final directory. So there we go. Now we should have a copy complete. Now we can do git add final. And now I can remove this stage and revert this change. And then let's run both of them. npm run serve ng multi struct directives, and we run both of the application. So we're going to run both of them. We're going to see how it was before and how it was after. So one is going to run on 4200, one is going to run on 4201. So let's stop this one and let's run it again. Right, that's one. And then if I go back to my app, so this one is supposed to be that. And then if I run this one, localhost 4201, then that should be the other app, which is right now being built. There we go. Yes, so if you look at this one, it doesn't have the message. This is the starter. If you look at this one, this has the message. So I think we have got this correctly. So if I remove this, nothing gets shown. If I remove this, we see the message. Yay! So discard the changes and then add it. Git status, git add, git commit. Actually, let's do a clear.
git commit. Let's see the git log. Just gonna be lazy and copy paste stuff there. Git commit m, and we do a final files, and we do a git push. Cool. I do also want to see how many recipes are remaining in chapter 2. I hope not too much. Enhancing template type checking for custom directives. How did we do that? We added strict input types to true in Angular compile option in tsconfig. I think is there by default now, right? Or no? Excited to see you on Twitter Space. Yep, same here. I hope I can be free by the time that happens, because I have a couple of things to do tomorrow. But yes, I'm quite excited as well. Okay, let's try that. So we can do something like create a new app, npm run, create. We do chapter 2. We should call it ng template type checking. Okay. So we do this, and we also give this title. What do we call it? Enhanced template type checking. Okay, let's see. We're gonna see if this is really necessary now, to be honest, because I'm thinking it might have been solved already. But let's see. Npm run serve. We're gonna say ng template type checking. So it runs it on port 42. We can copy some code from the other repository. That should be Angular Cookbook. So we can put it here. Actually, let's see if I can find it. So this one should have a start here, multi-structural directives. No, that's not the one. Enhanced template type checking. And the starter template has any particular styles? No. Anything in the index? No. Anything in the HTML that's particular? A bit. We do have this. We do have this from the highlight search. Okay, I'm gonna copy it from there. But then what do we have? We have a search text, we have this, and we don't have any styles. And then we have the directive as well. Okay, so I'm gonna take a break of about 5 minutes. So I'm gonna be back after 5 minutes. I need to drink, and also I need to do some other stuff. So be right back.
Okay. Yeah, that took some time. All right, so let's quickly copy the code from here. I think we had the search directive in attribute directives. Yes. What I'm going to do is I'm going to copy the whole. Would there be a name in here? Let's see. Da-da-da, not needed. In app component that's not needed at all. This would be a bit different, but let's copy this. So the attribute directive here, this should be a main. So I'm going to copy all of this and oh, not this one though. Sorry. It should be chapter 2, but in final apps chapter 2 ng attribute directive. There we go. This, and in here we got this here. Cool. Let's close the others. And then also let's go to start. So start, ng template, this app component. How about we just copy everything from final chapter 2 app. We would just have to replace the app name, which we can still do. But what else do we need to? No, I don't think we need anything else. So let's quickly do that. Chapter 2, remove the app from here, and then add the app folder, which would be good. Let's restart. And we would also be able to change the title. Enhanced template type checking. Go to app component, change it right here. And we should be good. Okay, so let's have a look at the app. Enhanced type checking. Cool. Whatever. Cool. So what did we really do in this one? It has been some time. So highlight color should be yellow, light green, and charcoal. Okay. And we also changed a bit. Yeah. So this is going to be this. This highlight color should actually be type highlight color, and then this should be highlight color dot yellow. Okay. Okay. So now that we have this right here, and this is a start here. Okay, so we got the highlight color, original HTML, blah, blah, blah. In app component, we are passing this yellow. Okay, so now if I try to go to app here and then try to go and say highlight color red, would it work? Oh, no, not red, but like this. Now it says red, another highlight color. And what was the problem in chap here? This doesn't seem to, yeah, as I was saying, this doesn't seem to be a problem in the latest ones. Yeah, let's see if I can find it here. Nope. So this one, what if I do this highlight color equals to red? This would also say red is not assignable to type highlight color. Yeah, I don't think this is a problem anymore. We had this before. Strict input types to true. Let's remove this. Let's save this. Yeah, here it says not assignable. Yes, because we have a strict type template type checking enabled by default. Cool. That kind of saves my time to some extent. That's good. And then what do? We signal types, blah blah blah. And what happens if I try to do this? If I even try null here, it's not gonna work. So if I say null,
Yeah, it's not gonna want because we have strict type checking. Can I point to highlight color since it's in P? A what? So if I do highlight, I think I broke it. Highlight directive and go to app component, app highlight. Looks good to me. Highlight directive is here. Yeah, for some reason it broke. Let's say if I do highlight, yeah, now it's fine. Highlight color equals null. Does this work? Shouldn't be. So null is not assignable to type highlight color. That makes sense. So yeah, we don't have this problem at all. So what I'm going to do is I'm going to remove this project. RMRF start apps chapter 2. I'm going to be right back.
ऑलराइट, आई हैव टू गो. जरियाब कह रहे हैं थम्स अप. थैंक यू जरियाब. यार हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो I'm gonna remove all of this changes. में कुछ है क्या प्रोजेक्ट जैसा है? नो, आई डोंट थिंक वी नीड दिस. तो एक रेसिपी रह गई है इसकी, और उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि एक अच्छी चीज़ ये है कि आई कैन रिमूव दिस रेसिपी. फ़ौरन से पहले रिमूव कर देते हैं. लेट्स रिमूव दिस. बेचारे लोगों के कुछ पेजेस तो कम हो जाएंगे. बट देन मुझे नई रेसिपी इम्प्लीमेंट करनी है जो कि है अप्लाइंग मल्टीपल डायरेक्टिव्स टू द सेम एलिमेंट यूजिंग डायरेक्टिव कंपोजिशन एपीआई. आई डोंट नो कि इसका नाम यही रखना चाहिए या नहीं, बट आई चेंज इट. द डायरेक्टिव यूजिंग द डायरेक्टिव कंपोजिशन एपीआई. तो इसकी आई थिंक इसका जो कोड या पूरा स्ट्रक्चर है वो फिर मैं लिख रहा हूँ जब बात आएगी इसकी. बट अगर मेरा ये ख़त्म हो जाता है तो चैप्टर 2 एटलीस्ट एंड हो जाएगा, और 13 में से 2 चले जाएंगे, तो जस्ट 11 चैप्टर्स रह जाएंगे. तो डेट्स वेरी गुड. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. मुस्तफ़ा क्या हाल है? तो आई थिंक दैट्स गुड. स्लाइड्स जल्दी से देख लेते हैं कि अपलोड हुई कि नहीं हुई. स्लाइड्स, वेब डेवलपमेंट. स्लाइड्स रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? ये अजीब सी बात है. हम्म. अच्छा, ये वेब डेवलपमेंट इन उर्दू वेब डेव बेसिक्स पे है. वेब डेव बेसिक्स में हमें ये मिल रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए. क्या मैंने कस्टम वो रखी हुई है डिप्लॉय? अच्छा, मैंने कस्टम डिप्लॉय रखा हुआ है. ओके. ओके, चलो एक काम ही करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तो यहीं पे बंद करते हैं, और स्लाइड्स को अपडेट मैनुअली कर लेते हैं, और फिर इस स्ट्रीम को कर देते हैं एंड. तो आई थिंक मुझे बस ये काम करना है कि मुझे गल्प डिप्लॉय चलाना है, एंड दैट शुड बी गुड. सो npm run deploy. हम्म. लेट्स सी. हो गया डिप्लॉय. देख लेते हैं gh पेजेस में क्या कह रहा है ये. डज नॉट कंटेन. नहीं, वो गलत बात है. यहाँ पे gh पेजेस होना चाहिए. सही है. तो नाउ आ गया, इंडेक्स html भी आ गया. इसका मतलब है बस मुझे डिप्लॉय की कमांड चलानी थी एसेंशियली. तो लेट्स सी. अभी तक कैश के अंदर पुराना ही कोड है, तो स्टिल इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. बट आई थिंक हम इन द मीन टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो पूछ सकते हो. देन वी आर गोइंग टू जस्ट रैप इट अप. पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट बिल्ड. ओके. Completed job. Good. हम्म. और रिपोर्ट बिल स्टेटस में क्या कर रहा है ये? अच्छा, टेलीमेट्री को बता रहा है. ओके, सही है. रिपोर्टेड सक्सेस, कंप्लीट जॉब, शुड बी गुड. हाँ, अब आ गया ना ये लोगो नीचे. सही. आई थिंक नाउ वी गुड. लेट्स सी इफ आई कैन रिफ्रेश एंड सी कि ये कैश पे क्या करता है. वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, टॉक्स पे कुछ भी नहीं है. स्लाइड्स,
पे वेब डेवलपमेंट बेसिक उर्दू है। ये कुछ चीज़ हजम नहीं हो रही, वेब डेव बेसिक्स। हम्म हम्म अच्छा, लेट्स सी वन थिंग। ये जो डिप्लॉय कर रहा है ये कर रहा है मेन से। अगर हम चले जाएं टॉक्स पे तो टॉक्स में वेब डेव बेसिक्स है और इसका इंट्रो। तो यार ये काम तो करना चाहिए। व्हाई डज दिस नॉट वर्क? स्लाइड्स टॉक्स। क्योंकि हमारे पास ये HTML पड़ी हुई है। ओके, सही है सही है सही है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है ये यहाँ पे। अच्छा, जब हम डिप्लॉय करते हैं तो ये उस फोल्डर को डिलीट करता है कि नहीं करता? ये शायद नहीं करता डिलीट। लेट्स डू दिस, हम इसको डिलीट करेंगे। नॉट डिलीट डायरेक्टरी, बट अगर मैं इस फाइल को खोल लूँ तो आई वॉन्ट टू डिलीट दिस फाइल। डिलीट दिस फाइल, यस यस, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अब ट्राई करूँ यहाँ से और मैं वेट कर लूँ बिल्ड का, तो शुड बी अ न्यू डिप्लॉयमेंट होगी। ये बिल्ड करेगा, ये डिप्लॉय करेगा, हमारी स्लाइड्स काम करेंगी। सही है, ज़बरदस्त। फाइनली लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द ऐप। ऐप के अंदर हमने एक्टिविटी वगैरह भी सेट कर दी थी और हमने एक और काम ये किया था कि हमने व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट की वीडियो डाली थी। तो आई वांट टू सी वन थिंग, और वो है कि अगर मैं फेसबुक पे जाके इसको शेयर करूं, नहीं, अगर मैं इसको ट्विटर पे जाके शेयर करूं और मैं यहाँ पे जाके इसका लिंक डालूं, तो व्हाट डज दिस शो? सही है, तो ये इसका लिंक शेयर करता है। गुड 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 गुड। सही है, देन दैट्स गुड। सोल्जर बॉय फॉलोड यू, अच्छा। हम्म ओके, इस बिल्ड को देख लेते हैं कि बिल्ड फाइनल हो चुकी है कि नहीं हुई। नहीं हुई। हम्म राइट, current status finished, file sync, good. yes, अब डिप्लॉय हो चुका है, तो नाउ वी हैव द राइट वन। तो हमारे पास स्लाइड्स आ गई। इस पे खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और अब हम देख सकते हैं सेक्शन इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, और उसकी हमारे पास स्लाइड्स मौजूद हैं। गुड हो गया। सेक्शन इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे आ गया। आई सॉ योर कोर्सेज वाली वीडियोस, मनेश्वर मेहरा ऑन यूट्यूब। यस यस, आई अंडरस्टैंड। वो कोर्सेज वाली वीडियोस और स्लाइड्स जो है वो दोनों तकरीबन सेम चीज़ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप codewithahsan.dev/slides पे जाओगे, codewithahsan.dev/slides, तो ये आपको एग्जैक्टली दिस स्लाइड्स पे लाएगा और यहाँ पे कोर्स इंट्रोडक्शन और जितनी भी स्लाइड्स वीडियोस के अंदर यूज़ की हुई हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई दैट पिक्चर डजंट वर्क, बट हम देखेंगे मे बी लेटर ऑन। और वेब डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपर, do the images work here? I think yes. Yeah, looks like it. Cool, awesome. I haven't checked the website yet. The full course is live? No, full course is not live. क्योंकि ये course I'm currently working on it, so it's not finished. It won't be finished. So what would happen is that you're gonna get a couple of videos every, I don't know, every 1 or 2 days later. So if you go to course, you can actually follow it. You can go to the course and you can see which ones have been uploaded. So right now we have a lot of chapters, but only the first chapter has been uploaded, but only some videos. So we have course introduction, what is web development, and an activity for setting the PC for web development. As I'll get more videos done, I'm going to upload those.
So they're going to be uploaded both on YouTube, and then you can always come here and just mark them. So I would highly encourage to just use this tool or the site itself to just follow through, and you can always mark, okay, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया. And then when the next video comes in, you're going to get notified on YouTube. You will also be notified on Discord. So if you're not on Discord, you can join Discord Code with Ahsan server as well. Okay, I hope that answers the question. So I think I'm gonna go now. Thank you so much for watching the stream. We're very close to finalizing the chapter 2 of Angular Cookbook, which is really good. So I'm assuming hopefully we'll be able to publish it in April or before that, hopefully. And yeah, just keep an eye on YouTube for the coming videos. They're going to be edited super fast, and then they're going to be available as well. So yes, thank you so much. And yeah, sure. Thank you, Manish. Thank you for the appreciation. Make sure to share this with other friends that you know about. And yeah, I think tomorrow we're gonna have a couple of more videos being uploaded. So yeah, I'm super excited as well. All right. Thank you. I'll see you later. Bye. अब बात करते हैं कुछ इम्पैक्ट की. तो इसके अलावा मेरी बहुत सारी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें से एक मेजर एनजीएक्सवाई सेक्टर है, जिसके तकरीबन 8.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं, और सिर्फ गिटहब पे 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं. बट देयर इज मच मोर. अब बात करते हैं कोर्स के इंट्रोडक्शन की. तो वेब डेवलपमेंट बेसिक्स जो है वो किस किस के लिए सूटेबल है. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये कोर्स आपके लिए है. अगर आपको उर्दू और हिंदी समझ आती है और आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो ये कोर्स आपके लिए है. और अगर आप कोई ऐसे डेवलपर हो जिसने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया हुआ है लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो भी ये कोर्स आपके लिए है. और ये इसलिए क्योंकि हम बहुत बेसिक्स लेकर चलेंगे इसको. अब बात करते हैं इस कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इस कोर्स के अंदर आप अपनी पहली वेब एप्लीकेशन बना रहे होंगे. आप सीखेंगे कि गिटहब किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए. आप ये सीखेंगे कि